Good morning friends, we continue with RTP November 2020. RTP November 2020. RTP November 2020. Let's start. Question number 20. Question number 17, sorry, AS20 है. Question number 17, that is AS20. This is earnings per share, EPS पे question दिया हुआ है. Let's start calculating. A1 Limited supplied the following information. You are required to compute the earnings per share as per AS20. आपको AS20 के हिसाब से EPS निकालना है. Net profit attributable to equity shareholders 17-18 का 1 crore, 18-19 का 1 crore 50 lakhs. Number of shares outstanding prior to right issue 50 लाख शेयर्स. कितने शेयर्स है? ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स. राइट इशू करने से पहले कितने शेयर्स है अपने पास? 50 लाख शेयर्स. राइट इशू 1 न्यू शेयर फॉर ईच 4 आउटस्टैंडिंग शेयर्स. मतलब हर शेयर 4 शेयर के सामने एक शेयर देना है. दैट इज 12,50,000 शेयर्स राइट इशू करके दिया हुआ है. राइट इशू प्राइस, ये ऑफर प्राइस है. सब्सक्रिप्शन प्राइस 96. लास्ट डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द राइट्स इज 30th June 2018. फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू द एक्सरसाइज ऑफ राइट्स on 30 June 2018 was 10. This is market price before right issue and 96 is the subscription price. मतलब ये प्राइस में शेयर होल्डर्स को ऑफर करेंगे. That's it. So let's calculate. सबसे पहले तो प्रोविजन लिखना जरूरी है. As per AS20, whenever a company issues right shares, whenever a company issues right shares, number of shares outstanding prior to right issue, number of shares outstanding prior to right issue should be multiplied by adjustment factor in addition to time factor. Now let's calculate the adjustment factor first. That is market price before right issue. फॉर्मूला है अपॉन theoretical market price. Now let's leave 2 lines. Let's find out theoretical market price. Theoretical market price is equal to mn plus s upon n plus 1. M stands for prevailing market price. What is the prevailing market price? 101 if I'm not wrong. Yes, 101. Number of shares eligible to buy one right share. I suppose for every 4 shares एक शेयर देने वाले थे. For every 4 shares 1 share. तो 4 plus subscription price 96 में देने वाला था upon 4 plus 1. This is how we have solved. The market price M stands for number of shares eligible to buy. मतलब हर 4 शेयर के लिए एक शेयर plus the subscription price that is 96 and divided by N is number of shares 4 and plus 1. So this comes to 5. 101 into 4 करते हैं. It's 404 plus 96. This comes to 500 upon 5. That is 100. ये हो गया market price before right issue upon theoretical market price. So 101 divided by 100. That is 1.01. That is the right factor. Let's continue. Now ये तो हो गया. Right factor भी आ गया. Let's calculate the EPS.
Calculation of EPS. First we'll calculate basic EPS of the current year. और current year कौन सा है? Let me check current year. Current year is 1819. Okay. Basic EPS year is 1819. The formula is PAT minus preference dividend upon weighted number of shares. तो 1819 का पैट कितना है? लेट्स चेक. 1 crore 50 lakh and the shares are 50 lakh. So 1 crore 50 lakh minus preference dividend कुछ भी नहीं है, divided by number of shares 50 lakh. So the basic EPS comes to 3 rupees. Basic EPS of 1718. लेट्स कैलकुलेट 1718 का प्रॉफिट कितना है? 1 crore. Okay, so basic EPS 1 crore. This is 1 crore. Yes. सबसे पहले तो 1819 का weighted number of shares. एक मिनट. Let me do by. This is not perfect. 1 second. Let me rectify this. ये ऐसे नहीं होगा. I need to prepare a table only. Particulars. No need of particulars also. Sorry. Let's start. Opening number of shares. This is 1/1/1819 ना. 1/1/4/18. कितने ओपनिंग शेयर्स है? 50 lakhs. Yes, 50 lakh शेयर्स है. और राइट इशू कभी किया? 30 जून को. सो दिस इज 50 lakh शेयर्स इंटू इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा वो? 3/12 अप्रैल मई जून. फिर 30 जून को राइट्स आया. कितने शेयर्स आए थे? 12,50,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, 12,50,000. लेट मी चेक. 12,50,000 shares. Yes. So the total shares comes to 62,50,000 into 9/12. ये ऐसा होगा. So number of shares outstanding prior to right issue should be multiplied by adjustment factor in addition to time factor. तो ये time factor हुआ, ये adjustment factor हुआ. Now this is the way to present. मैंने डायरेक्ट कर दिया था, sorry for that. 50 lakhs into 3 divided by 12 into 1.01. This comes to 12,62,500 shares. And this is 62,50,000 into 9 divided by 12. It's 46,87,500. Let's calculate the total shares. 59,50,000 are the weighted number of shares. Now EPS of 1819, that is PAT minus preference dividend upon weighted number of shares. It's perfect now. PAT था 1 crore 50 lakh. Yes. Divided by 59,50,000. This comes to 2.52 per share. Yes. उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है. स्टेप वाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा. 2.52 रुपीज़ 2.52 पर शेयर.
नाउ दिस इज EPS ऑफ 17-18 जो हमने रिपोर्ट किया होगा. 1 crore इज द प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर्स कितने थे ओपनिंग शेयर्स 50 lakhs. दिस इज द बेसिक EPS विच वी हैड रिपोर्टेड अर्लियर ₹2. नाउ अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का EPS भी रीस्टेट करना पड़ेगा. बिकॉज प्रीवियस ईयर का EPS क्यों रीस्टेट करते हैं, जस्ट फॉर प्रॉपर एनालिसिस और कंपैरिजन. बराबर, जस्ट फॉर प्रॉपर कंपैरिजन. सो वेयर आई विल डू दिस, 1 second, let me clear this. Restated EPS of 17-18 to be reported in the financial statements of 18-19. Restated EPS is equal to 1 crore है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 50 lakh शेयर्स इनटू द एडजस्टमेंट फैक्टर भी देना पड़ेगा 1.01. सो दिस इज बेसिकली 1 crore 50 lakh into 1.01. This comes to 50 lakh 50,000. तो आपका रीस्टेटेड EPS इस हिसाब से चेंज होगा. दिस इज 1 crore divided by 50 lakh 50,000. This comes to 1.98 रुपीज 1.98. तो इन दिस वे यू नीड टू प्रेजेंट. इनिशियली मैंने डायरेक्ट कर दिया था लेकिन वो वेटेड एवरेज शेयर्स निकालने के लिए वर्किंग करना पड़ेगा. सो ओपनिंग शेयर्स इनटू द टाइम फैक्टर इनटू द एडजस्टमेंट फैक्टर सो दैट द प्राइस आफ्टर द राइट शेयर्स एंड बिफोर द राइट शेयर्स रिमेन द सेम. द नंबर ऑफ शेयर्स बिकम्स इक्विवेलेंट प्लस एडिशनल राइट इशू. तो ये हो गया टोटल शेयर्स इनटू द टाइम पीरियड 9 months. EPS कैलकुलेट किया, प्रीवियस ईयर का EPS को रीस्टेट किया. दैट्स इट. दिस इज AS20 earnings per share and this is question number 17 of RTP November 2020. Now let's move for the next question, that is question number 18, that is deferred tax, AS22. Let me clear this. You can read the sum by the meanwhile and we can have a discussion on that. Let's start. This is question number 18. I suppose question number 18, yes, A और B है. तो let's see. The first is the theory and second is the practical. This is AS22 deferred tax. We are left with two problems, 19 and 20. We'll do that right now. And we'll complete the RTP November 2020. Write short note on timing difference and permanent difference. Okay. Basically AS22 दो ही difference cover करता है, timing difference and temporary timing difference and permanent timing difference. As far as the concept is concerned, all permanent timing differences are not covered by AS22, whereas the temporary timing difference are covered by AS22. मतलब certain expenses allowed by the IT in the current year and subsequently disallowed in the subsequent years. एंड वाइस वर्सा. सच डिफरेंसेस आर नोन एज टेम्पररी डिफरेंस. मतलब आज नहीं तो कल उसका एडजस्टमेंट करने मिलेगा, वो सब टेम्पररी टाइमिंग डिफरेंस है. और परमानेंट टाइमिंग डिफरेंस मतलब वंस एंड फॉर अलाउ भी नहीं होगा. तो ये सब अलाउ नहीं किए जाएंगे, ये सब एक्सपेंसेस और इनकम अलाउ नहीं किए जाएंगे. तो ये परमानेंट टाइमिंग डिफरेंस है, तो वंस एंड फॉर डिसअलाउ होंगे तो वो कवर नहीं होते AS22 के अंदर. लेट्स रीड दैट. शॉर्ट नोट रीड कर लेते हैं. अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम फॉर अ पीरियड आर सेल्डम द सेम. मतलब ऑलमोस्ट दे आर द सेम. परमानेंट डिफरेंसेस आर दोस
विच अराइज इन वन पीरियड एंड डू नॉट रिवर्स सब्सिक्वेंटली, मतलब मैंने जैसे बोला कि ऐसे डिफरेंस है जो एक पीरियड में आ रहे होते लेकिन वो रिवर्स नहीं हो पाते. फॉर एग्जाम्पल एन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स और एन एक्सपेंस दैट इज नॉट अलाउेबल एज ए डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पस, मतलब जो एग्जेम्प्ट इनकम है वो वंस एंड फॉर डिसअलाउ हो जाएगी, मतलब वो कंसिडर ही नहीं होगी. एंड सर्टन एक्सपेंसेस जो इनकम टैक्स हमेशा के लिए डिसअलाउ कर देता है. सो सच इनकम एंड एक्सपेंसेस आर टेम्पररी टाइमिंग परमानेंट डिफरेंसेस एंड दे विल नॉट गिव राइज टू डिफर्ड टैक्स असेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी. Timing difference are those which arise in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. For example, depreciation and bonus. Depreciation claimed by income tax and claimed by IT, claimed by income tax and claimed by company are different in certain years and subsequently higher in IT and lower in company and vice versa. So such differences are known as temporary differences. That's it. Let's move for the second question. Rama Limited has provided the following information. डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मतलब एज पर कंपनी मैं बात करूंगा, एज पर आईटी सामने वाला. कंपनी ने बुक किया 6 लाख, आईटी ने बोला 10 लाख, तो हुज इनकम इज ऑन द हायर साइड. जो डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम करेगा उसकी इनकम हायर साइड और उसकी इनकम लोअर साइड पे होगी, और जो डेप्रिसिएशन कम क्लेम करेगा उसकी इनकम हायर साइड पे होगी. आई रिपीट, आराम से टेक इट वेरी इजीली. एज पर कंपनी डेप्रिसिएशन इज 6 लाख and as per income tax depreciation is 10 lakhs. So can I say as per company the profit is on the higher side and this will give to book income, that is a company's records के हिसाब से profit will be higher as compared to income tax. So this will give rise to deferred tax liability. Okay. And unamortized preliminary expenses as per tax records. Unamortized preliminary expenses as per tax records. What does this create? एक एक करके करते हैं. There is adequate evidence of future profit sufficiency. You are required to calculate the amount of deferred tax asset or liability to be recognized as transition adjustment assuming tax rate at 30%. आराम से करते हैं. सबसे पहले तो मैं फर्स्ट पॉइंट करूंगा डेप्रिसिएशन वाला. Let's start. As per AS22, depreciation claimed by us मतलब कंपनी, is rupees 6 lakhs. Whereas allowed by IT is rupees how much? 10 lakhs. This will give rise to I will say book income minus taxable income. Book income मतलब कंपनीज का और taxable income मतलब IT का. That is 6 लाख माइनस 10 लाख, क्योंकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा 4 लाख से, क्योंकि आईटी वाला ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम करने वाला. इनटू द टैक्स रेट, व्हाट इज द टैक्स रेट गिवन? 30%. दैट इज 4 लाख का 30%, 1,20,000. सो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा तो दिस विल क्रिएट DTL, दिस विल क्रिएट डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी. वो मुझे टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आएगी क्योंकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा है. सिंपल. नाउ सॉरी, अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स. अनअमोर्टाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया एज पर टैक्स, बराबर है. तो क्या होगा, अभी हम लोग राइट ऑफ करेंगे तो कैन आई से आवर प्रॉफिट्स गो डाउन एज कंपेयर टू IT. Our profits go down as compared to IT. So point number 2, इसकी एंट्री क्या होगी, मैं इसकी एंट्री भी कर देता हूँ. P&L अकाउंट डेबिट टू DTL. प्रॉफिट्स कम होंगे और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगा 1,20,000 से. अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस मतलब एज पर टैक्स अपने को अभी तक राइट ऑफ नहीं किया हमने 60,000. सो द मोमेंट वी विल रिकॉर्ड 60,000 एज पर टैक्स रिकॉर्ड बोला, मतलब उनके हिसाब से अपने को अमोर्टाइज किया नहीं हम लोग ने, तो हम लोग को अमोर्टाइज करना पड़ेगा. सो व्हेन वी डेबिट 60,000 आवर प्रॉफिट्स विल गो डाउन एज कंपेयर्ड टू IT प्रॉफिट्स. सो दिस विल गिव राइज टू DTA, डिफर्ड टैक्स असेट, क्योंकि हमारा प्रॉफिट्स कम है तो अपने को गवर्नमेंट से लेने का बनता है. सो
पर डिफर्ड टैक्स एसेट कभी क्रिएट कर सकते हैं जब फ्यूचर प्रॉफिट्स होने वाले हैं, तभी भी। क्वेश्चन में लिखा था कि देयर इज फ्यूचर प्रॉफिट एविडेंस, देखो देयर इज एडिक्वेट एविडेंस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट सफिशिएंसी, यू कैन क्रिएट डीटीए ओनली व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट फ्यूचर में आप इनकम कमाओगे और वो डीटीए रिवर्सल हो सकता है, तभी डीटीए क्रिएट कर सकते हैं। सो एज पर AS 22 अनअमोर्टाइज्ड क्या नाम है एक्सपेंस का? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अमाउंट to rupees 60,000. This will give rise to taxable income minus book income. Obviously taxable income will be higher as compared to book income, क्योंकि हम लोग बुक करेंगे ये चीज एक्सपेंस के नाम पे, टैक्सेबल इनकम तो खत्म हो गया। दैट इज 0 - 60,000 इनटू द टैक्स रेट, दैट कम्स टू 18,000. दिस विल क्रिएट डिफर्ड टैक्स एसेट. The entry would be DTA account debit to P&L account. This is 18,000 rupees. Net deferred tax liability is equal to it will be 1,20,000 minus 18,000 में बोलूंगा. This comes to 1,08,000. That's it. The sum gets over. Very simple problem. In this way you need to present it so you get the entire 5 marks. Actually जो 5 मार्क के लिए एस पूछते हैं उसके लिए ये बोला गया. That's it. Now we have completed this. Now we move for question number 19, that is AS 24, deferred discontinuing operations. Let's start. Okay, let's start now. This is AS 24 discontinuing operations. Let me write this. Question number. This is question number 19A and then we have 19B. Okay, so this is 19A, AS 24 discontinuing operations. Discontinuing operations. Let's start. What do you understand by discontinuing operation? मतलब what is discontinuing operation वो पूछ रहे हैं आपको. What are the disclosures and presentation requirements of AS 24 for discontinuing operations? Explain in brief. Students, it's a request. Even though they are theory questions, please listen to me very carefully. आप अगर इसका meaning समझ लेते हो, by any chance if you have not understood anything, you can understand it very properly and you can write in your own words also. So as per AS 24 discontinuing operations, a discontinuing operation is a component of an enterprise. Yes, it is a part of an enterprise only, which you are going to discontinue in the future. That the enterprise pursuant to single plan is disposing of substantially in its entirety, such as selling the component in a single transaction or by demerger. मतलब either through a single transaction you will sell it off or through demerger. Demerger मतलब discontinue in parts, discontinue it in parts, or spin off of ownership of the component of the to the enterprise shareholders. मतलब either you transfer the ownership to the enterprise's shareholders. By any mode you do, this is known as a discontinuing operation. Disposing of piecemeal. Piecemeal topic पता है आपको, group 2 में है. Piecemeal distribution मतलब separating it in parts, टुकड़ा टुकड़ा.
such as selling of the components assets and settling its liabilities individually, or terminating through abandonment, मतलब आप शट डाउन कर देते हो कोई बिजनेस को, मतलब कोई डिपार्टमेंट को, कोई ऑपरेशन को अबेंडन कर देते हो उसको, एंड दैट रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशंस। या तो आप सेपरेट बिजनेस लाइन डिसकंटिन्यू करते हो, तो कोई एरिया लोकेशन को सेट बंद कर देते हो। दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, एंड यू कैन डिस्क्लोज इट सेपरेटली कि ये मैंने डिसकंटिन्यू किया अपार्ट फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। तो ये सारा डेफिनेशन कवर करता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। एन एंटरप्राइज शुड इंक्लूड द following information relating to a discontinuing operation in its financial statements, beginning with financial statements for the period in which initial disclosure event occurs। मतलब ये सब चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। A description of the discontinuing operations, business or geographical segments in which it is reported as per AS70, मतलब कौन सा सेगमेंट आपने डिस्क्लोज किया था इनिशियली, the date and the nature of the initial disclosure event, the date or period in which the discontinuation is expected to be completed if known or determinable, मतलब कब तक खत्म होने वाला वो भी आप डिस्क्लोज कीजिए। The carrying amount as of the balance sheet date of the total assets to be disposed and the total liabilities to be settled, the WDVs and the how you will settle, what is the amount and the nature, the amount of revenue and expenses in respect of ordinary activities attributable to the discontinued operation during the current financial reporting period, income and expenses allocable to the discontinued operations, the amount of pre-tax profit or loss from ordinary activities attributable to the discontinued operation during the current financial reporting period, and the income tax expense related thereto, मतलब pre-tax profit loss भी दिखाना चाहिए from the discontinued operations, the amount of net cash flows attributable to the operating, investing and financing activities of the discontinued operation during the current financial reporting period, मतलब what are the operating, financial and investing activities resulting from the discontinuing operation. So purely a theory question. Let's move for question number 19B, and that is AS26 intangible assets. This is 19B now. So आपको almost इस हिसाब से लिखना है, तो you will get 4 marks out of the 5 if you write all such respective wordings. So this is November 2020 RTP 19B, and this is now AS26, that is intangible assets. Let's start. X Limited carried on business of manufacturing bakery products. The company has 2 trademarks, Sun and Surya. अच्छा, उनके 2 trademarks हैं, तो they are intangibles. 1 month before, the company comes to know through one of the marketing managers that both trademarks have allegedly been infringed by other competitors engaged in the same field. किसी ने अपने trademarks का misuse किया है. After investigation, legal department of the company informed that it had weak case on trademark Sun and strong case in regard to trademark Surya. मतलब एक में हम लोग को हारने के chances है in regard of trademark of Sun. And in case of Surya, we have a strong case. X Limited incurred additional legal fees to stop infringement of both trademarks. कंपनी ने additional खर्चा किया. Both trademarks have a remaining legal life of 10 years. How should X Limited account for this legal cost incurred relating to the 2 trademarks? Question clear होना चाहिए. सबसे पहले तो 2 trademarks है, किसी competitor ने दोनों trademarks का misuse किया, accordingly legal suit file हुआ. तो सन के केस में थोड़ा केस वीक लग रहा है, स्ट्रॉन्ग के केस में द केस इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो अकॉर्डिंगली कंपनी इनकर्ड एडिशनल 10 लाख रुपीज टू अवॉइड सच इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क्स. एंड सो हाउ शुड द 10 lakhs बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसके बारे में बात किया. लेट्स रीड द सोल्यूशन. आप अपना सोल्यूशन देख सकते हो आरटीपी में, वही मैं रीड कर रहा हूँ. एज पर AS26, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन एन इंटेंजिबल एसेट आफ्टर इट्स परचेज. यस, दिस इज अ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर. After its purchase or its completion should be recognized as an expense unless and until it meets the asset recognition criteria. मतलब उससे कोई efficiency बढ़ती तो आप capitalize करो, otherwise it should be recorded as an expense. However, if the subsequent expenditure enables the asset to generate future economic benefits in excess of its originally assessed standard of performance or can be measured and attributed to the asset reliably, then such expenditure should be added to the cost of the intangible asset. As I mentioned, if it increases the efficiency, you should capitalize, otherwise you should expense it out. The legal cost incurred for both the trademarks do not enable them to generate future economic benefits in excess of its originally assessed standard of performance. They only ensure to maintain them if the case is decided in the favor of the company. Therefore, such legal cost incurred for both the trademarks should be recognized as an expense. Very clear, very simple as they have asked. Now let's move for the last question, that is AS29. That is question number 20. उसमें भी 2 parts है AS29 के. So let's start question number 20.
sorry, this is question number 20. I suppose this is the A part. In fact, I'm not writing any part because both are theoretical. AS 29, and this is basically provisions, contingent liabilities and contingent assets. Provisions, contingent liabilities and it will be contingent assets. This is the last question of November 2020 RTP. How will you distinguish contingent assets with contingent liabilities? Explain in brief. Oh, very simple. Contingent assets और contingent liabilities का distinction पूछा है. Let's start. A contingent liability is a possible obligation that arises from past events. Yes, possible obligation that arises from past events, and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more future uncertain events not wholly within the control of the enterprise, which are not in the control of the enterprise. Hence, they are known as uncertain events. ये था definition. A present obligation that arises from past events. Present obligation that arises from past events, but is not recognized because. पर हम लोग उसको recognize नहीं करते because it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, because there is no outflow of resources, so hence it will not be recognized as a contingent liability. A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made. If you are not able to estimate the amount of obligation that you need to incur, it should not be recognized. An enterprise should not recognize a contingent liability but should be disclosed. Disclosure जरूरी है, बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखेगा because the occurrence is not certain. A contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. If the occurrence is very remote, you should not. You should disclose only. A contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of economic resources embodying economic is remote, very less. Now let's talk about contingent assets. Usually, contingent assets usually arise from unplanned or unexpected events that give rise to the possibility of inflow of economic benefits to the enterprise. कोई केस चल रहा है, अपने को लग रहा है कि अपने को पैसा मिलेगा अर्जी जाएंगे, तो वी शुड डिस्क्लोज इट एज अ कंटिंजेंट एसेट. एन एग्जांपल इज अ क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परसुइंग थ्रू लीगल प्रोसेसेस वेयर द आउटकम इज अनसर्टन. An enterprise should not recognize a contingent asset since this may result in recognition of income that may never be realized. As AS9 भी क्या बोलता है? Income should be recognized only when it is measurable and when it is certain. Contingent asset recognize नहीं करने का क्योंकि unnecessary income books में दिख जाएगी. So it should not be disclosed unless and until it is certain. It should not be recognized basically. Disclosure देना है. However, when the realization of income is virtually certain, then the related asset is not a contingent asset and its recognition is appropriate. अब जब realization ही certain हो जाएगा तो फिर उसको contingent नहीं बताएंगे, उसको actual asset बताएंगे और actual income भी disclose करेंगे. A contingent asset is not disclosed in the financial statement. It is usually disclosed in the report of the approving authority, that is board of directors in the case of company, and the corresponding approving authority in case of any other enterprise. Normally board of directors report में बताते हैं, not in the financial statements, where an inflow of economic benefits is probable. Contingent assets are assessed continually, and if it has become virtually certain that an inflow of economic benefits will arise, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी ईयर हम लोग असेस करते, रिव्यू करते और समझो कलेक्शन सर्टन हो जाता है, द असेट एंड द रिलेटेड इनकम आर रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द पीरियड इन विच द चेंज अकर्स. That's it. This was about contingent asset and contingent liability. Let's read the second question. Alpha Limited has entered into a sale contract of 7 crores with Gamma Limited during 18-19 the financial year. The profit on this transaction is 1 crores. The delivery of the goods to take place during the first month of 1920 financial year. First month में delivery होने वाली है. In case of failure of Alpha to deliver within the schedule, a compensation of 2 crores is to be paid to Gamma. समझो अगर डिलीवरी टाइम पे नहीं हो तो 2 crores का compensation Alpha will pay to Gamma Limited. Alpha Limited planned to manufacture the goods during the last month of 18-19 financial year. As on the balance sheet date 31st March 19, the goods were not manufactured and it was unlikely. Last month में manufacturing चालू किया और manufacture हुए नहीं, as it was unlikely that Alpha will be in a position to meet the contractual obligation. Alpha शायद उसका कमिटमेंट पूरा कर पाने वाला नहीं है. You are required to advise Alpha Limited on the requirement of provision of for contingency in the financial statements for the year 31st March 2019 in line with AS 29. आपको क्या लगता है, प्रोविजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? Alpha Limited has to make a provision because the terms of contract क्या है कि first month of the financial year
1920 में सप्लाई करने हैं, और अगर नहीं कर पाए तो 2 करोड़ का प्रोविजन करना पड़ेगा। सडनली अल्फा लिमिटेड ने प्रोडक्शन चालू किया लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 18-19 में, और उनको लगता है कि वो अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर पाएंगे, तो उनको प्रोविजन करना चाहिए, बिकॉज देर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। Okay, so as per AS 29, provisions for contingent assets and contingent liabilities provides that when an enterprise has a present obligation, yes, there is a present obligation to deliver the goods as a result of past events. Past events क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था, एंड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या आएगा कि अगर डिलीवरी नहीं की तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी. That probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of obligation. A provision should be recognized. Yes, there is an outflow of resources, probability है, और अमाउंट भी मेजरेबल है 2 करोड़. Alpha Limited has the obligation to deliver the goods within the scheduled time as per the contract. It is probable that Alpha Limited will fail to deliver the goods within the schedule, and it is also possible that to estimate the amount of compensation. Yes, उसका डिलीवरी डिले होने वाला है, उनको पता है, अमाउंट भी मेजरेबल है. Therefore, Alpha Limited should provide for the contingency amounting to 2 crores as per AS 29. This is it, my dear friends. We have completed November 20 RTP entirely. I request you to please watch it, clear your doubts, and if you have any difficulty you can ask me till your exams, because your exams are approaching very near. Thank you very much. That's it. We will meet in the next session. In next session I will give a small video how to attempt the paper. कैसे questions attempt करने हैं, which questions to attempt, how to score 60 plus or maybe 70 plus, depends on the time management and the allocation of problems which you do. That's it. Thank you very much.